नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाकिल। आज मेरे यूट्यूब चैनल इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मशीन लर्निंग के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता क्या है? सबसे पहले हम उन चीज़ों के बारे में देखेंगे कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो एक होता है सुपरवाइज्ड, एक होता है अनसुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एक मेथोडोलॉजी होती है जो मशीन लर्निंग के अंदर हम यूज में लेते हैं, जो सुपरवाइज लर्निंग का एक वेरिएंट होता है जिसके अंदर कोई भी डेटा है वो पर्टिकुलर लेबल्ड फॉर्म में नहीं होता है। और लेबलिंग का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर डेटा क्लासीफाई नहीं होता है, डिफरेंट कैटेगरीज में होता है, जिसको हम लेबलिंग को मेनली हम सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। और जिस डेटा के साथ में लेबलिंग नहीं होती है उसको हम अनसुपरवाइज्ड कहते हैं। ये एक पर्टिकुलर लर्निंग मॉड्यूल्स है जिसके अंदर हम ट्रेनिंग डेटा सेट के साथ में हम इनको एक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के साथ में हम इनको यूज करते हैं। और इन सारी चीज़ों से हम एक वाटर मॉड्यूल्स मिक्स्ड चीज़ें होती हैं उनको एक डिफ्रेंशिएट करते हैं और अलग अलग तरीके से हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मशीन लर्निंग। दिस लर्निंग माइट हैव फ्यू एप्लीकेशंस बट द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज वेरी यूजफुल। क्या होता है उन सारी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता क्या है? द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज ए लर्निंग मेथोडोलॉजी इन मशीन लर्निंग अनलाइक इट्स अदर वेरिएंट like supervised learning. Here we do not label the data with which we want to train the modules. Labeling the data mean to classify the data into different categories. This labeling mainly take place in supervised learning, but in unsupervised learning there is no labeling. The module learns through the training itself from the data. The understand its working. Let's take an example and also an example algorithm based on supervised learning. In this case we will use the clustering algorithms. This algorithm help to form the clustering of similar data. अब हम बात करते हैं। So let's take data to apple the water molecule mixed up together. The aim is to make the module learn to differentiate between an apple and a water molecule. The algorithm will classify based on shape, size and colors. Apple is a small size, round in shape and red in color, whereas the water molecule is large in size. Watermelon is a large of the size, ellipsoid in shape and greenish in color. The module will learn the differentiate based on these the credentials, the data points similar to that. The apple will form the cluster. The same will be for the watermelon and will form a different clusters. This is what unsupervised learning does. It trains the module by making it learn about the data and work on it from very start. Then we will start also after the data is clustered and classified, we can easily label the data in separate category as the data is already solved now. होता क्या? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इन मशीन लर्निंग
क्या होता है, इनपुट डेटा एंड आउटपुट डेटा। सपोज वाटरमेलन एंड एप्पल दोनों चीज़ें हैं, ये डेटा एज ए इनपुट जाता है और ये मॉड्यूल्स के साथ में क्या होता है, यहाँ पर ट्रेनिंग होता है, टेस्टिंग होता है, लेबलिंग होता है, देन ये फाइनली एक आउटपुट रिसीव होता है। जब लेबलिंग होता है कि ये सारे क्या है, एप्पल्स हैं और ये क्या है, सारे वाटरमेलन हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ये अनसुपरवाइज डेटा है और ये क्या लेबलिंग के बाद में सुपरवाइज्ड डेटा है। जो इनपुट डेटा जो हम देते हैं वो अनसुपरवाइज्ड डेटा दिया जाता है और जब फाइनली ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बाद में जो डेटा रिसीव होता है वो सुपरवाइज्ड डेटा रिसीव होता है। एडवांटेज ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, क्या क्या फ़ायदे होते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के। देयर आर सम रीजन वाई वी सम टाइम चूज द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इन प्लेस ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। नंबर 1, लेबलिंग ऑफ डेटा demands a lot of manual work and expenses. Unsupervised learning solves the problem by learning the data and classify it without any labels. Next क्या होता है, the label can be added after the data has been classified, which is much easy. Another one, it is very helpful in finding the patterns in data which are not possible to find using normal methods. And another one, dimensionality reduction can be easily accomplished using unsupervised learning data. Another one, this is the perfect tool for data scientists as unsupervised learning can help to understand raw data. Another one, we can also find up to what degree the data are similar. This can be accomplished with the probabilistic method. And next advantage, this type of learning is similar to human intelligence in some way, as the module learns slowly and then calculate the results. And disadvantage of unsupervised learning. Now let's have a look at some cons of unsupervised learning algorithms. क्या होता है उस चीज़ के बारे में हम देखते हैं, उस चीज़ के बारे में हम सारी चीज़ों को देखते हैं। उसके बारे में जब हम देखते हैं, the result might be less accurate as we do not have any input data to train from. Another one, the module is learning from raw data without any prior knowledge. It is also a time consuming process. The learning phase of the algorithm might take a lot of time as it analyzes and calculates all possibilities. Another one, for some projects involving live data, it might require continuous feeding of the data to the modules, which will result in both inaccurate and time consuming results. And next, the more the features, the more the complexity increase. Another one, algorithm related to unsupervised machine learning. अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग से रिलेटेड एल्गोरिथम कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट वन इज के मीन क्लस्टरिंग इन मशीन लर्निंग। के मीन क्लस्टरिंग क्या होता है, के मीन इज ए क्लस्टरिंग एल्गोरिथम टाइप, इट इज ए इटरेटिव क्लस्टरिंग अप्रोच। दिस एल्गोरिथम स्टेट्स द सिमिलर डेटा पॉइंट शुड बी इन क्लोज proximately. For this we will select the value of k. The value of k is the number of data points. Now select centroid in the data set. The centroid will act as data accumulation area and take each centroid and measure the distance of k data points. The ones near the centroid will get clustered. For this we use the method like
Euclidean distance as measuring operations. Another one is K-nearest clustering. K-nearest neighbor clustering algorithm. K-nearest or K-nearest neighbor is also a clustering based algorithm. This method is used for those the data point which can be selected in any class or for those who don't have any class or cluster assigned. The algorithm starts with the selection of the point which we want to work on. Then we have to select the value of k. K will be the number of points around the selected points. These points can belong to multiple clusterings. Then now measures the distance of each point with the test point using Euclid and Manhattan distance measuring techniques. Sort the result in ascending order. The test point will end up in the cluster whose points were the closest to the test point. Next, hierarchical clustering in machine learning. Hierarchical clustering क्या होता है? In this, we form multiple clusters which are distinct to each other, but the contents inside the cluster are highly similar to each other. For this, we would use the distance matrix for calculation purpose, and then for the visual representation of the clusters, a dendrogram would be formed. The algorithm work in a specific way. किस वे में काम करती है एल्गोरिथम, उन सारी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं. The algorithm would treat each observation as a separate cluster, then it would find two most similar clusters and merge them. This step goes on the iterative until all the clustering merge together. The main result is the dendrogram. It would show the similarity between the clusters. There are some other methods of finding similarity as well as like distance criteria and linkage criteria. The progress of merging the clustering is agglomerative clustering. These were some of the main algorithm or type of unsupervised learning that we have discussed now. Another one is application of unsupervised machine learning algorithm. कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं. नंबर 1, इट इज़ मेनली यूजफुल इन फ्रॉड डिटेक्शन इन क्रेडिट कार्ड. सबसे ज़्यादा अनसुपरवाइज्ड फ्रॉड डिटेक्शन को रोकने के लिए यूज में लिया जाता है. नंबर 2, यूजफुल फॉर जेनोम एनालाइजिंग. थर्ड, यूजफुल इन डेटा प्री प्रोसेसिंग. क्या होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग, इसके बारे में हम देखते हैं. बेटर लर्निंग मेथड देन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. बेटर लर्निंग मेथड्स कौन सा होता है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग माइट बी ए गुड substitute for unsupervised learning. It is a combination of both supervised and unsupervised learning. The main advantage of this type of learning is that it reduces the error of both supervised and unsupervised learning. For instance, it will only cluster the unlabeled data which is possible to cluster. The result will be classified automatically after being the labeled. Then the consumes less computational power and less time consuming. Finally, we learned about the unsupervised learning. It works, what are pros and cons, it is type of applications. So students, अब हम और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएंगे. तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए एंड सुरक्षित रहिए. और दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को आप
सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।